Hello everyone, myself Nikita Sharma. Today my topic is very important. All competitive examination. You are visible my writing? Okay. The topic we are going to study today is at BSc and MSc level. Okay. Uh, ये हेडिंग आपको देखकर लग रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल। इसको एक बार हम आपको हिंदी में समझाना चाहते हैं। रेप्टाइल क्या होता है, सरीसृप बोलते हैं, और एवोल्यूशन मतलब होता है विकास, और ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। यानी हमारे जो सरीसृप यानी रेप्टाइल जो है उनका विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में आज इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है क्या, रेप्टाइल का ये इंट्रोडक्शन क्या है, फिर देन आगे हम डिस्कस करेंगे। Introduction. Reptiles are the first truly terrestrial vertebrates that become independent of the water from reproduction because of the dependent of the amniotic egg. They evolved from primitive amphibian-like ancestors during the late Paleozoic era and dominated the Mesozoic era, which is called Age of Reptile. This was the introduction of reptile. Okay. Now let's start the origin of reptile. Can you visible? Okay. Reptiles are believed to have originated from primitive amphibian called Lambrinthodon during the Carboniferous period. Okay. You understand my pronunciation? Okay. If you do not understand, then comment. Now let's see the geological period. Origin and diversification. Origin late Carboniferous period. Diversification Permian period. Okay. Next, evidence for amphibian origin of reptiles. Let's discuss the amphibian origin of reptiles. First, similar skull structure. Second, Lambrinthodon teeth. Third, similar vertebral pentadactyl limb. One by one discuss heading. First, similar skull structure. Primitive reptiles and Lambrinthodon amphibian are similar skull bone. Okay. Lambrinthodon teeth. Both group had folded dentine teeth known as Lambrinthodon teeth. Similar vertebrate. The vertebral column of early reptile resemble that are amphibian. Can visible this page? Okay. Next, pentadactyl limb. 5 digital limb were present in both group. Okay. This amphibian origin of reptile. And the next most important this heading, Cotylosaur. Cotylosaur is the first few reptile. Let's discuss the Cotylosaur. A small lizard-like primitive reptiles, heavy body, short limbs. Okay, these are so adaptation responsible for reptilian evolution. Okay, these are some character for adaptation. Let's see. First, dry cornified skin, internal fertilization, amniotic egg, a strong limb with claws, and last, well-developed lungs. Okay. Next, visible this page. Okay. Importance of reptilian evolution. First vertebrate fully adapted to land. Ancestor of dinosaur, bird and mammal. Dominated to Mesozoic era age of reptile. Now whatever we have read, we will know it short form. Okay. First, ancestor of reptiles, Lambrinthodon amphibian. Second, first primitive reptile, Cotylosaur. Period of origin, Carboniferous period. Key adaptation, amniotic egg. Age of reptile, Mesozoic era. Okay. Now this in our origin of reptile. Okay. ये वाला हेडिंग आपको विजिबल हो रहा होगा, जिसमें से रेप्टाइल का ओरिजिन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। ओके, दिस पेज इज विजिबल। ओके स्टूडेंट, लेट डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल। मेनली 3 डिस्कस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। फर्स्ट, एनाप्सिडा, सेकंड Synapsida, and third Dapsida. First, Anapsida, no temporal hole. Second, heavy body form. Example for turtle. Synapsida, one temporal hole, called mammal-like reptiles, evolved into mammal. Evolutionary significance, development of teeth, jaw muscles. Example for mammals. Third, last, Dynapsida, two temporal hole, large body size, advanced locomotion. Example for dinosaur, snake, crocodile, bird एंड लिजर्ड। अब ये जो हम समझे हैं इसको अब हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में समझेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कैन यू विजिबल? ओके स्टूडेंट, फ्लो चार्ट ऑफ रेप्टाइल एवोल्यूशन। प्रिमिटिव एम्फीबियन, क्या
primitive amphibian, evolved from Lamprinthodon, कॉटिलोसॉर, फर्स्ट रेप्टाइल। अभी आपको मैंने प्रीवियस पेज पर बताया था कॉटिलोसॉर जो था वो हमारा क्या है, फर्स्ट रेप्टाइल है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, फर्स्ट एनोप्सिडा, सैनोप्सिडा, डायोप्सिडा। एनोप्सिडा नो टेम्पोरल होल, हैवी बॉडी फ्रॉम। अभी आपको ये तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने को आए तो आप इस तरह बनाकर विजुअल करा सकते हैं। Okay, student, this video is completed. If you do not understand, then please ask by question. Okay, if you understand, then like the video and subscribe the channel. Okay, bye, student.